more than 1.1 is seen in all cases of ascites except. Remember, wherever the SAG is more, basically the portal pressure is more. SAG more than 1.1 is seen in any cause of portal hypertension. So wherever there is no portal hypertension, there is not going to be SAG more than 1.1. So out of these causes, it is peritoneal tuberculosis. Liver तो यहाँ affect हो ही नहीं रहा है ना? So remember, cirrhosis में portal hypertension, liver failure में portal hypertension, hepatic metastasis, liver failure हो के portal hypertension. So non-portal hypertension causes. So इसमें nephrotic syndrome भी आ जाएगा. Right, pancreatitis आ जाएगा, peritoneal TB आ जाएगा. These are non-cirrhotic. So the SAG is going to be less than 1.1. Is this clear with everyone? Right. So that's a simple trick for SAG. ज़्यादा SAG मतलब portal pressure ज़्यादा, portal hypertension वाले causes. Next one, ejection fraction. What is ejection fraction? Ejection fraction. That means out of how much the ventricle is receiving, out of that, how much the ventricle is ejecting out. So ejecting out is stroke volume. How much the ventricle is accumulating or getting is end systolic volume or end diastolic volume. The ventricle receives blood in diastole. So end diastolic volume is what is there. So remember, it is ratio of stroke volume to end diastolic volume, not end systolic, and it is not the opposite. It is ejected out of how much has been received. So that is stroke volume divided by end diastolic volume. Logical. End systolic नहीं, end diastolic. End systolic मतलब eject करने के बाद कितना बचा. That is what is end systolic. Okay. Tall T wave. You know that T wave repolarization. Repolarization is because of potassium. So tall T wave is seen when there is hyperkalemia. Hypokalemia is underkalemia. Remember, it shows U wave. U wave in hypokalemia, and you have hyperkalemia is tall T wave. Where do you see sine wave pattern? Where do you see sine wave pattern? Remember, severe hypokalemia shows sine wave pattern. SINE. Severe increase in potassium. Severe increase causes sine wave pattern. Okay. Murmur of HOCM becomes louder with, what is the mnemonic for this? Murmur of HOCM becomes louder with, the mnemonic for this is VAST. Valsalva, amyl nitrate and standing. So out of the options here, the ST. Remember, exam में the tricks help you to answer the questions fast. ठीक है, फिर आप बहुत time waste नहीं करोगे thinking the entire concept. So it is VAST, ST, that is going to be standing. ठीक है, clear with everyone? Next one, filigree bone injury. Filigree, L-I-L-I. Remember, filigree is lightening. Filigree is lightening. Okay, filigree is lightening. That is how you remember. That's the trick there. Filigree is lightening. What triad of injury bomb explosion में होता है? Remember, bomb blast. Blast में क्या होता है? BLA. Bruise, laceration and abrasion. Right? Bruise, laceration, abrasion. Bruise, laceration, abrasion. The difference is puncture laceration या punched lacerations. क्या बोलते हैं उसको? Right. Remember, it is puncture wounds, not the punched wounds. It is puncture wounds. Puncture laceration. Okay. So bruise, abrasion and puncture laceration. Okay. Okay. So remember, this blast has BLA. There is no fracture here. Correct. Fracture नहीं आता है इसमें. Spores of which bacterium are used for biological validation control of autoclave? Remember the mnemonic for this. short में देखा है. Auto का क्या है? Steering. Auto का steering. So remember, it is Bacillus stearothermophilus. Okay, stearothermophilus. ठीक है. I hope you remember this. Auto का steering. So stearothermophilus is for autoclave. Okay, that is for autoclave. Disinfection of cystoscope and bronchoscope. What is used? Very important. Glutaraldehyde. Okay, glutaraldehyde is for the scopes, the cystoscope and bronchoscope.
सोडियम हाइपोक्लोराइट इज व्हाट इज यूज्ड फॉर ब्लड स्पिल. ब्लड स्पिल हुआ तो क्या यूज करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइट. दैट इज फॉर ब्लड स्पिल. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट. Which of the following is true for protection acquired with hepatitis B vaccine? वैक्सीन में सिर्फ क्या है? HBS वाला एंटीजन जैसे जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है. सो ओनली एंटी HBS एंटीबॉडी पॉजिटिव ओनली. नो एंटी HBC is seen here. Only anti HBS. Okay. No anti HBC. No HBS. It is only going to be anti-HBS. Okay, anti-HBS. Is this clear with everyone? If I talk about window period of hepatitis B, उसमें क्या होता है? Window period constantly present in hepatitis B is anti-HBC. Okay, constantly present. Window period में यानी acute वाला है, कौन सा type होगा? IgM. Okay, that's going to be IgM. ठीक है, तो इसका भी हमने शॉर्ट में ट्रिक्स देखा है. हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी, ऑल द ट्रिक्स. आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट? ओके. क्रिएटिनिन, यूरिया एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच अमीनो एसिड? नाइट्रिक ऑक्साइड तो आपको पता ही है, इट इज आर्जिनिन. द आंसर इज आर्जिनिन. क्रिएटिनिन में भी आर्जिनिन होता है. यूरिया में 2 अमीनो एसिड्स लगते हैं, यूरिया AA. रिमेंबर यूरिया में AA आर्जिनिन प्लस एस्पार्टेट. ओके, आर्जिनिन प्लस एस्पार्टेट लगता है. क्रिएट क्रिएटिनिन, क्रिएट मैग रिजल्ट्स, उसमें भी आर्जिनिन आता है, राइट? सो रिमेंबर आर्जिनिन इज कॉमन टू ऑल ऑफ दिस. ओके, आर्जिनिन इज कॉमन टू ऑल ऑफ दिस. नाइट्रिक ऑक्साइड इज आर्जिनिन. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट्स वाया विच सेकेंडरी मैसेंजर? सेकेंड मैसेंजर कौन सा है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए? सेकेंड मैसेंजर कौन सा है नाइट्रिक ऑक्साइड? रिमेंबर इट इज साइक्लिक GMP. गाने GMP के लिए इट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. नाइट्रिक ऑक्साइड EDRF, इट इज साइक्लिक GMP. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.